गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू बिपिन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आम इंडियन पॉलिटी रो सेकंड क्लास करिबा जो थरे कि आम प्रिएम्बल ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आज रो एमसीक्यू रे आम 38 एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। एटा करेक्शन करिवे 25 नुहे 38 ओके 38 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा प्रिएम्बल ऊपर बेस करिकी। सो बहुत इंपोर्टेंट रहिबो जो माने एलटीआर पई प्रिपरेशन होचंती, एसएसडी पई किबा अदर एग्जाम पई प्रिपरेशन होचंती सेमानको पई आज क्वेश्चन गुड़ी बहुत हेल्पफुल हम। सो समस्ते अटेंशन सहित एंड पर्यंत क्वेश्चन गुड़ी देखूँ एवं पाखरे नोट एंड पेन रखिक मार्किंग करूँ केतोटी आपनकर ठीक हो। ओके चलो आम जमती कि सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आम गोटे पर गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करुचे। तो प्ले लिस्ट अवेलेबल अच्छी। तो जो मैंने चाहूँ ग्रुप में जॉइन होगापी आपने तले डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन आपंकर लिंक दी जाइए व्हाट्सएप लिंक एवं आपंकर टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी जाइए जॉइन हो पारे। ता सहित आपने चैनल को विजिट करके डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट को जी प्ले लिस्ट गलापर आमर टॉपिक वाइज आमर कौन कराई आमर एमसीक्यू क्लास गुड़िक सब रही प्ले लिस्ट बनाई आपने चाहिए आराम से देखिपारे। ता सहित जदि आप चाहूँ थियोरी क्लास देखापी तो थियोरी क्लास प्ले लिस्ट अच्छे आपने देखिपारे। ओके चलो स्टार्ट करवा डेरी करवानी। आज फास्ट क्वेश्चन की जी फास्ट क्वेश्चन आप सामने रहा व्हाट इज रेफर्ड टू एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रेफर्ड टू एज द आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कहूँ डीपीएसपी कहूचे ना आपनकर फंडामेंटल राइट्स हम ना आपनकर प्रिएम्बल हम ना यूनियन लिस्ट हम। सो राइट आंसर होचे आपनकर ऑप्शन सी प्रिएम्बल। ओके चलो नेक्स्ट जीवा। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रिएम्बल। कौन राइट आंसर। Which constitutional amendment added the words socialist, secular and integrity to the preamble? 44th amendment ना आपनकर 42 amendment ना 52 amendment आपन 40th amendment कौन तो राइट आंसर कौन हम। राइट आंसर मन पकाओ 42 amendment बुझिला तो 42 amendment। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम वेयर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन derive its authority according to the preamble। कौन अब राइट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, द पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। कौन अब राइट आंसर। फ्रॉम वेयर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी। अथॉरिटी कथा पचारा सो राइट आंसर होची कौन द पीपल ऑफ इंडिया। मन रख द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर चलो नेक्स्ट जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बॉडी आपनकर बॉडीज आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। ए देछि आपनकर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी आपनकर देछि प्लानिंग कमीशन, 3 देछि आपनकर जोनल काउंसिल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द वर्ड्स कोड्स गिवन बिलो। को राइट आंसर आपनकर यूपीएससी रे आपनकर क्वेश्चन से 2013 आस्तला क्वेश्चन डी। ए अछि आपनकर 1 and 2 ओनली, बी अछि आपनकर 2 ओनली, सी अछि 1 3, डी अछि 1 2 3। मन रख जदि से पचारुछि आपनकर ए बॉडी गुडा जो अछि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे 3टा को डज नॉट मेंशन, 3टा को मेंशन नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट जीवा। व्हिच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन हबो करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी रूसियन रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन पचारछि व्हिच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मन रख जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा जदि पचारला ताले आपन एटा हबो रशियन रेवोल्यूशन। मन रख रशियन रेवोल्यूशन। ओके चलो नेक्स्ट। द गवर्नमेंट एनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट इज 1996। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। यार ऑब्जेक्टिव कोडा नुह से पचारुछि। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, एटा तो थिला ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, एटा भी तो रहिबो। ऑप्शन सी टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन, एटा तो हबनी। ऑटोनोमस रीजन तांको कोन प्रोवाइड करा दैथिला कि से राइट से तांको दिया दैथिला कि नाही। सो एटा ऑप्शन सी जेतु नॉट पचारछि नॉट आइडेंटिफाइड पचारछि सो राइट आंसर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट जीवा। व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट। व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट। स्टेट सोशलिज्म ना कम्युनिस्टिक सोशलिज्म ना आपन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ना आपन कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म। यस ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर जोटा कि कोन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यस नेक्स्ट जीवा। व्हिच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। Which article guarantees equality before the law?
आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17। राइट आंसर होची आर्टिकल 14। मन रख आर्टिकल 14 ये जो आपनकर कोन दउची ना इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक अछि। नेक्स्ट, व्हिच केस कन्फर्म्ड दैट द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच केस कन्फर्म्ड दैट द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवारी यूनियन केस ना मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस ना आपनकर मिनर्वा मिल्स केस हम कौन राइट आंसर। केशवानंद भारती केस कहला कौन कहला ना प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवारी केस कौन कहला, तापर एलआईसी कौन कहला, ए तीनटा को मते दीटा को मते कहबो। बेरुवारी यूनियन केस कौन कहउतिला आ एलआईसी कौन कहउतिला, ए दीटा को मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग ए टूथपेस्ट इज ए डैश। ए सेल्स टैक्स यू पे while purchasing a toothpaste is a dash. Option A, tax imposed by the central government. Tax imposed by the central government but collected by the state government. Tax imposed by the state government but collected by the central government. Tax imposed the collected by the state government. Yes, option D have a correct answer. Tax imposed and collected, both of impose करिवे collect करियो कैसे ना state government। चलो नेक्स्ट, which revolution inspired the ideals of liberty, equality and fraternity? Fraternity कौन राइट आंसर। रशियन रिवोल्यूशन तो आम जस्टिस ऊपर पढ़ी के आसिले, जदि आम पचार लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कथा पचारुची ताले राइट आंसर होची फ्रेंच रिवोल्यूशन। मन रखो कौन हम फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्टेड केबे करा गला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे? 1946, 1947, 1950, 1951 केबे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्टेड करा गला आपनकर केबे? मते राइट आंसर एटा देबे। ऑप्शन भूल अछि, मोर आंसर में भी भूल अछि, एटा मते आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणबे केउ वर्ष ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करा गला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए manifestation of the democratic character of the Indian polity? Which of the following is not a manifestation of the democratic character of the Indian polity? कौन है राइट आंसर? रूल ऑफ लॉ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज ना आपन पीरियडिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन है राइट आंसर? राइट आंसर होची आपन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कौन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objectives of the Indian constitution has been provided in dash. Option A, preamble and fundamental rights. Option B, preamble and DPSP. Option C, fundamental rights and DPSP. Option D अछि none of the above. DPSP माने directive principle of state policy. So right answer कोन हबो? इकोनॉमिक जस्टिस आपन रासी preamble and DPSP. Okay, next question, what is the meaning of word sovereign in the context of the Indian constitution? Sovereign meaning कौन? Dominion under British crown ना independent state ना member of NATO ना आपनकर member of UN। मन रखो sovereign meaning से होची कौन? independent state। so right answer option B होगा correct answer। चलो next, which session of the Congress adopted the socialistic pattern of society? मैं भी फास्ट पॉलिटी क्लास रे हम ए क्वेश्चन टा डिस्कशन करथिले, निश्चित भाव मोर जति मन पड़ुछि हाँ ना नहीं। व्हिच सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस अडॉप्टेड द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी? कराची सेशन, आबादी सेशन, नागपुर सेशन, लखनऊ सेशन। आम कही मन अच्छी मोर जति मन पड़ुछि आबादी सेशन। कौन एटा हम आबादी सेशन रे। चलो नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन? गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन केउ आर्टिकल? 1921, 29 to 30, 25 to 28, 32 to 35। कौन राइट आंसर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन होची आपनकर 25 to 28। नेक्स्ट जिबा, व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो? व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, आपनकर एटा थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। ओके, सो राइट आंसर होची ऑप्शन डी हबा करेक्ट आंसर। देखो ये आपंकर गला 18 नंबर क्वेश्चन आपंकर गला। नेक्स्ट आपंकर ये लिखाई एक एटा आपंकर 19 धरिक चलो, एटा 19 नंबर क्वेश्चन तो धरिक चलो। ठीक अच्छे, चलो क्वेश्चन पढ़ो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया as a secular state?
which of the following describes India as a secular state? Fundamental rights, directive principle of state policy, fifth schedule, preamble of a constitution. मन रखो right answer होची preamble of a constitution describe India as a secular state. Okay, चलो next. Which of the following amendment act amended the preamble of the Indian constitution? कहार अधिकार अच्छी आमेंडमेंट करने संशोधन करने 44th अमेंडमेंट एक्ट ना 42 अमेंडमेंट एक्ट ना 56 अमेंडमेंट एक्ट ना इट हैज नेवर बीन अमेंडेड. कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी 42. कहार अधिकार अच्छी 42 अमेंडमेंट एक्ट अनुसार. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ अ प्रिएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काहाठर आमे कौन करिचे प्रिएम्बल टाको बोरो करिचे आमे प्रिएम्बल को काहाठो बोरो करिचे इटली ना आपनकर कनाडा फ्रांस यूएसए मन रख राइट आंसर कौन हम यूएसए. सो राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट जवा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेज फॉलोइंग फॉर इट्स सिटीजन्स. कौन राइट आंसर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेज फॉलोइंग फॉर द सिटीजन social, political and religious justice, social, economic and cultural justice, social, economic and political justice, economic and political justice. कौन राइट आंसर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉलोइंग फॉर सिटीजन्स social, economic and political justice. एटा राइट आंसर. ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नॉट यूज प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जोटा यूज है नहीं केउन टर्म टी रिपब्लिक ना इंटीग्रिटी फेडरल ना सोशलिस्ट. फेडरलटा तो है आउ सब तो रिपब्लिक है इंटीग्रिटी है सोशल है सेकुलर है सोवरेनिटी है फेडरल है. सो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग liberties is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of money. कौन हम money not पचारिला not पचारिची. So right answer is liberty of money. Next दिबा what does the term secular in the preamble in the of the Indian Constitution? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूज करूचे सेकुलर वर्ड बा सेकुलर टर्म यार कौन पचार कौन कहे सेकुलर माने कौन व्हाट डज द टर्म सेकुलर इन द आमे जो तार अर्थ कौन नो स्टेट रिलीजन ना द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स ना आपनकर द स्टेट कैन फेवर वन रिलीजन ना नॉन ऑफ द एबव. राइट आंसर कौन हम नो स्टेट रिलीजन. ओके सो राइट आंसर होची नो स्टेट रिलीजन. नेक्स्ट जीवा द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स India to be a republic. What does it signify? Option A, India has a monarch. Option B, India has a president as its head. Option C, India follows a dictatorship. Option D, India is governed by a foreign ruler. ना एटा तो केबे हबनी. India has a president as its head. हाँ निश्चित भाव हम इंडिया हेड आम प्रेसिडेंट को मानुचे. सो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जीवा which of the following is a explicitly mentioned in the preamble of the Indian Constitution? कौन right answer? Equal right for all citizens, justice, economic development, political sovereignty. Question देछि which of the following is explicitly mentioned in the preamble of the Indian Constitution? Equal विषय नहीं. right answer होछि justice विषय को जाइछि. ओ right answer होछि ऑप्शन बी. Next, the preamble of the Indian Constitution was signed by how many people? The preamble of the Indian Constitution was signed by how many people? 300 ना 385 ना 499 ना 548. आम जानी केते जण 385. राइट आंसर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जवा which of the following is not पचारल not part of the vision outlined in the preamble? Which of the following is not part of the vision outlined in the preamble? Social justice, na. Political justice, no. Economic justice, no. Cultural justice, yes. Right answer होची cultural justice. ठीक अछि. चलो next. The phrase "we the people of India" is significant in the preamble.
व्हाट डज इट इंडिकेट कौन राइट आंसर ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्ट ऑफ द पीपल ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डिक्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कौन हम राइट आंसर मन रख ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर जोड़ा दीजिए कौन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्ट ऑफ द पीपल ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट which principle is established in the preamble regarding the state which principle is established in the preamble regarding the state should be a democracy the state should be a monarchy the state should be a republic the state should be a अपना dictatorship so right answer option C हबो the state should be a republic okay चलो next जीवा the term equality in the preamble of the constitution Indian constitution refers to which of the following equality कौन कहा को रेफर करे equal opportunity for all citizens ना equality before the law ना आपण prohibition of discrimination ना all of these निश्चित भाव all of these हबो सब जगह हबो ओके चलो नेक्स्ट the word fraternity in the preamble of the Indian constitution promote fraternity कौन प्रमोट करे नेशनल यूनिटी को यस नेशनल यूनिटी को प्रमोट करे इंटरनेशनल यूनिटी नुह फैमिली वेलफेयर नुह सोशल इक्वालिटी नुह राइट आंसर नेशनल यूनिटी फैटर्निटी नेशनल यूनिटी नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू द प्रीएम्बल इन द 42nd अमेंडमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आमे पढ़ी के आसिले सोशलिस्ट कौन हम सोशलिस्ट ठीक अच्छे जोटा कि 42 अमेंडमेंट रे सेटा कौन होइतिला एडेड कर जाइतिला चलो नेक्स्ट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू और फॉल्स प्रीएम्बल टा होची हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटा पार्ट एटा ट्रू और फॉल्स ट्रू निश्चित भाव ट्रू हबो राइट आंसर ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट जवा व्हाट डज सोवरेजन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवहार करूचे सोवरेजन से टर्म रो आंसर कौन तो क्या से रेफर करबा मीनिंग कौन इंडिया इज अंडर एक्सटर्नल कंट्रोल ना इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल आम पढ़ी के आसते राइट आंसर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस माने कौन सोशल जस्टिस यस निश्चित भाव में इकोनॉमिक जस्टिस हो पारे पॉलिटिकल जस्टिस हो पारे ऑल ऑफ दी निश्चित भाव में हम सो ऑप्शन ए बी डी सी सब ठीक अच्छे नेक्स्ट जवा द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द टर्म फ्रैटर्निटी व्हाट डज इट सिग्निफाई आम पढ़ी के आसले आम गोटे यूनियन आम पढ़ी नेशनल यूनियन कथा पढ़ी के आसले देख नेशनल यूनिटी ऑफ आपनकर सॉलिडारिटी आम पढ़ी के आसले सो राइट आंसर ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर चलो ठीक अच्छे शेष होला आपनकर 30 आपनकर 80 आज क्वेश्चन डिस्कशन करिछि आम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने निजे फील करि पाते को टाइप रे क्वेश्चन आ ये क्वेश्चन लेखिक रख सब नोट रे पीडीएफ सब रख मते पीडीएफ केतले मागिबो आपण कंप्लीट करंतु वाच तापर मते मागे सर हम कंप्लीट कर देछि मते व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करो तळे नंबर देछि व्हाट्सएप नंबर अछि तळे देखो सेठी कांटेक्ट करो मते मेसेज करिवो सर मोर कंप्लीट हेछि मते पीडीएफ टा पठांतु मो पीडीएफ पठेबी आपण से पीडीएफ रे प्रैक्टिस करंतु देन एग्जाम रे क्वेश्चन आसुछि ना मते कहबे मो टॉपिक वाइज करूछि आपण कहू जो माने कंप्लीट वाच करछुन मते पीडीएफ डायरेक्ट मागि पारे हम पीडीएफ देबी बुझेला ना जो माने नुवा छ चैनल को सब्सक्राइब करो एवं समस्त जो माने भी एबे देखुछ क्लास को लाइक करियो जमारो जेमती भूलिबो नाही लाइक करियो ओके चलो पुणी देखा नेक्स्ट चैप्टर रे नेक्स्ट एक क्लास रे थैंक यू टू ऑल।